Hi all. Today I'm sharing a video on Guillain Barre Syndrome. If we talk of Guillain Barre Syndrome, it's an immune-mediated phenomena, and it is a very common cause of acute flaccid paralysis in children. And what its features are? The first thing is it can affect any age, from childhood to adulthood. It may occur in anyone. Second important thing is when it present, Guillain-Barré syndrome, it presents with a weakness in the legs. Usually, the patient will complain of the weakness, pain in the legs, tingling may be present, and usually the weakness is symmetrical and it's progressive over days. And there will be flaccid paralysis. And if we will examine the patient, basically reflexes will be absent, and it's an ascending paralysis, progressing from days to weeks, reaching a nadir over 2 to 4 weeks, and it's a polyradiculopathy. Along with it, dysautonomia, that is dysfunction of the autonomic system in the form of arrhythmia, bladder bowel dysfunction, blood pressure abnormalities, or impaired thermoregulation may be present. Also, in one-fourth cases, we may get bulbar and respiratory involvement along with it. Now, if we will ask the patient, long back the patient may give history. Before 1 to 6 weeks he may have suffered from certain kind of infection with the virus or bacteria in the form of URI or GIT infection, and because of that infection what has occurred is, because of that infection whatsoever occurring because of the virus or bacteria, that antigen has led to the formation of the antibodies in the body, and that antibody cross reacts with the antigen of the nerve cell and leads to the damage to the nerve. It may react with the myelin or axon and lead to the acute polyneuropathy. So basically in Guillain-Barre syndrome, the main damage is of the nerve, which is occurring because of the immune phenomena and molecular mimicry phenomena. Now if we see the subtypes of the Guillain-Barre syndrome, so सबटाइप्स में सबसे कॉमन वैरायटी जो हमको मिलता है दैट इज अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, जिसको हम AIDP भी बोलते हैं. एंड वाई acute तो है ही, जितने भी GBS के वेरिएंट है सब acute variety है. Then it's an inflammatory process damaging the myelin, so we are saying demyelinating, and polyneuropathy because multiple nerves are involved. So acute inflammatory demyelinating polyneuropathy में जो molecular mimicry हो रही थी, जो एंटीबॉडीज या टी सेल के थ्रू जो डैमेज हो रहा था, दैट इज बेसिकली डैमेजिंग द माइलिन शीट. एंड वी नो माइलिन हमको हासिल करती है नर्व कंडक्शन को. सो वंस माइलिन शीट विल बी डैमेज, सो अगर हम उसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अगर देखेंगे तो वी विल गेट इज रिड्यूस कंडक्शन वेलोसिटी विल बी प्रेजेंट, देयर विल बी प्रोलॉन्ग डिस्टल लेटेंसीज, there will be presence of conduction blocks and increased temporal dispersion will be present. So these findings will be present in acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. And another variety we have is AMAN, that is acute motor axonal polyneuropathy. And जो इसमें डैमेज हो रहा है वो डायरेक्टली एक्सॉन को डैमेज कर रहा है, एंड जब डायरेक्टली एक्सॉन डैमेज करेगा तो it will lead to the severe damage. So there will be severe and rapid involvement. There will be severe weakness of both the limbs and flaccid weakness will be there. एंड क्योंकि ये सीवियर और रैपिड इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत बार बल्बर इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ द फेशियल मसल्स एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन. एंड अनदर वैरायटी वी हैव इज, और जब एक्सोनल वैरायटी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट द रिड्यूस्ड मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल. एंड AMSN अगर हम देखें तो दैट इज अक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, एंड इसमें बेसिकली मोटर के साथ साथ सेंसरी नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. Then we have Miller-Fisher syndrome, जिसको हम OAA के साथ रिमेंबर कर सकते हैं. That is ophthalmological abnormalities will be there, ataxia will be there, and areflexia will be there. So अगर हम इसको समझे गिलेन बारे सिंड्रोम को, तो बेसिकली बहुत वीक्स पहले से 1 to 6 वीक पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ URI और GIT. उस इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज बनी थी, टी सेल्स की प्राइमिंग हो गई थी, एंड देन बोथ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों रोल प्ले करती है. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनी थी वो जाके क्रॉस अटैच कर जाती है विद द नर्व के एंटीजन से. अब ये किसी भी कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली जो नर्व है उसका एक्सॉन या माइलिन शीट के साथ ये एंटीबॉडीज और टी सेल जाके डैमेज करती है, एंड बिकॉज ऑफ द डैमेज वी गेट दिस पॉलीन्यूरोपैथी. एंड बिकॉज ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी वी गेट वीकनेस, जो असेंडिंग और यूजुअली हमको कैसा मिलता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में. तो दीज आर द थिंग्स वी गेट इन GBS. नाउ फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ गिलेन बार सिंड्रोम, हमको जो फीचर्स चाहिए मेनली, एक तो प्रोग्रेसिव वीकनेस होना चाहिए. हमने देखा कि डेज से लेके 4 वीक्स तक प्रोग्रेस करता है, वो नाडिर रीच कर देता है 2 to 4 वीक्स में. तो दैट शुड बी अ प्रोग्रेसिव वीकनेस. अनदर फीचर
it should involve is areflexia. Reflexes should be absent क्योंकि ये lower motor neuron involvement है इसलिए. Then another जो features strongly support करते हैं diagnosis of the Guillain-Barre syndrome are clinical में अगर हम देखें तो progression from days to over 4 weeks. Then there will be symmetrical involvement. हम अगर पोलियो की बात करें, हम ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस की बात करें, जितने भी एफपी के अदर कॉजेज है उसमें यूजुअली व्हाट वी गेट इज एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, जबकि हमको गिलेन बार में क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर. Another thing, it's mainly a motor neuropathy. So there will be mild sensory symptoms or signs. Then along with it we can get autonomic dysfunction. अब जब भी autonomic dysfunction होगा तो उसमें हमको एरिथमियाज मिल सकते हैं, बीपी abnormalities मिल सकती है, thermodysregulation मिल सकता है, all that bowel bladder abnormalities मिल सकती है, ये सब चीजें हमको मिलेंगी. Then cranial nerve involvement में occur in the Guillain-Barre. cranial nerve जब involvement होता है तो उसमें majority में facial muscle facial nerve का involvement रहता है. Then we have absence of fever at onset should be there. अगर fever है तो we should think of the alternative diagnosis. Then typical electrophysiological findings जो हमको मिलेंगी, there will be absent F wave and H reflex. Another thing, अगर axonal variety है तो हमको nerve action potential में reduction मिलेगा, और अगर demyelinating है तो slowing हो जाएगी nerve conduction में. तो what we will get is reduced conduction velocity, prolonged distal latencies, presence of conduction blocks will be there, and there will be increased temporal dispersion. Then अगर हम CSF करेंगे तो what we will get is albuminocytological dissociation. There will be increase in the protein in the CSF, but the cell count will be less than 50. So these are the findings which favors the diagnosis of the Guillain-Barre syndrome. Now there are the certain features जो अगर present है तो हमको alternative diagnosis सोचने का जरूरत है rather than GBS. So suppose अगर कोई बच्चा है weakness के साथ present करे और अगर fever है at onset, then we should think of alternative diagnosis. If there is severe bladder bowel dysfunction at the onset of weakness, तो हम सोचेंगे alternative. Then sharp sensory level जो कि हमको usually transverse myelitis suggest करता है. Then asymmetrical weakness जो usually हमको poliomyelitis, traumatic neuritis वो suggest करती है. Then अगर pulmonary dysfunction is more as compared to the limb weakness, then also we should think of else diagnosis. Or if there is sensory involvement, severe sensory involvement at onset, or if in CSF we are getting more cells, mononuclear cells are more than 50 cells per cubic millimeter, then we should think of alternate diagnosis. Now, how to manage a child with the GBS, Guillain-Barre syndrome का हमको बच्चा मैनेज करना हम कैसे करेंगे? So जो हमारे पास मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है IVIG, दैट इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हम 2 ग्राम पर केजी से देते हैं, जो कि हम 2 to 5 days में दे सकते हैं. एंड अगर सपोज एक ट्रायल आपका IVIG का फेल हो गया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, यू कैन रिपीट दिस एंड गिव द सेकंड कोर्स ऑफ IVIG after 2 to 4 weeks. Another thing we can go for is we can go for the plasma exchange. Plasma exchange also hasten the recovery. And अगर आपने प्लाज्मा एक्सचेंज कर दिया है उसके बाद IVIG यूजुअली उसका यूज कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं कन्फर करेगा. देन अलोंग विद द IVIG एंड प्लाज्मा पैरेसिस, third thing we need to do is we need to give the supportive management. Suppose there is respiratory involvement, the child may need the ventilator, oxygen and all that. So cardiorespiratory care is important, physical therapy is important, nutritional care, management of the neuropathic pain, also bowel and bladder care if they are involved, and also there should be measures to prevent the DVT, that is development of the deep vein thrombosis and bed sores. Thank you.